what do we mean by informational content in SEO? Any quick answers to that one? Deepak, Sahin. The answer lies in the question itself. And so, all in all, a content piece that directly answers a query, which is kind of a knowledge seeking question or a knowledge seeking keyword. So, for example, if we are searching for what is CRM or top 10 SEO tools or probably how to grow tomatoes indoors. So, all of these questions are knowledge seeking questions, and the content that we produce to answer these questions is typically informational content. And the purpose of informational content is to help educate users and attract top of the funnel traffic. Okay, cool. That was one of the starter warm up questions. Let's move to the next one. Why are many SEOs questioning the value of informational content in 2025? Anyone wants to answer? Uh, Pratik has also joined. Yogesh, if you guys want to come up on the stage, just hit that mic button and I'll let you in on the stage. Okay. So I'll answer that. So 2024 will be the year of peak traffic. It will be marked in the history of SEO that the maximum traffic any website got through Google search engine would be the year of 2024. And what will happen is going forward is because it brings the informational content is such in nature that it drives good amount of traffic. Earlier it used to drive crazy amount of traffic, but because of AI overviews and all of that, the AI mode in launched in the US and UK last week, the traffic has dropped overall. The top of the funnel informational content, but the top of the funnel content does not always translate to leads or conversions or signups or sales. Okay, but with the recent changes, the number of clicks that we are receiving through top of the funnel content has reduced significantly. Okay, so now the question remains is the traffic performing or just appearing? Okay, so looking at the number of sessions on Google Analytics 4 or number of clicks on GSE, it's not going to help anymore. And we have to rethink and reinvent the informational content, the formatting of informational content. Cool. We'll move to the next question. But if you have any thoughts, feel free to unmute or raise your hand. And yep. Okay. Just wanted to check with Pratik. Pratik, you based in France. I have seen a couple of videos and news about riots in Paris. I hope you are safe and sound. Okay, cool. We'll move to the next one. Should businesses still invest in top of the funnel content? What are your thoughts, Pratik, Sahin, Deepak? क्या लगता है आपको टॉप ऑफ द फनल कंटेंट में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपके क्या थॉट्स हैं Okay, we'll wait for Deepak to join us on the stage again. Okay. पर्पस ही ट्रैफिक था तब तो नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई सेंस नहीं बनाता लाइक ब्लॉगिंग जो हम लोग करना चाहिए करते थे पहले लेकिन अगर पर्पस है कि उसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग सेल्स करना चाहते हैं या फिर उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह से देन आई थिंक ये कंटेंट अभी इंफॉर्मेशन कंटेंट चलेगा डायरेक्टली यूजर को
यूजर के लिए नहीं बल्कि एआई कंज्यूम कर सके और उस कंज्यूम करके यूजर को दिखा सके और कहीं न कहीं हम लोग अपीयर हो सकें साइटेशन में या सोर्सेज में। बहुत बढ़िया। आई थिंक सो आई कैन रिलेट टू दैट। हाँ हाँ, साइन आप कुछ ऐड करना चाहते हो? Yeah. I think informational content जरूरी है for topical increase topical authorities में भी help करेगा branding credibility like increase होने में। तो I think information content तो जरूरी है। 100% agreed, 100%। सो आई थिंक सो काफी एसईओज वही माइंडसेट से ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि बस ट्रैफिक ही उनका केपीआई है। एंड आई थिंक सो एसईओज की भी गलती नहीं है, जो लोग उनको हायर करते हैं, जो टीम बनाते हैं, और एसईओ टीम से एसईओ प्रोफेशनल्स है, वही एक्सपेक्टेशन है आप ट्रैफिक लाओ। बट कोई भी मैच्योर्ड एक्सपीरियंस एसईओ होगा वो उल्टा सोचेगा, मतलब ही और शी विल थिंक द अदर वे अराउंड कि बिजनेस क्या है, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, लीड्स कहाँ से जनरेट होंगे। ओके। एंड वो लीड जनरेट करने के लिए कौन सा ट्रैफिक लाना पड़ेगा। ओके। सो इन 2025 एंड बियॉन्ड बिजनेसेस को टॉप ऑफ द फनल कंटेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा जवाब है यस। बट उसमें थोड़ी और क्लैरिटी की जरूरत है कि वो टॉप ऑफ द फनल कंटेंट जो आप प्रोडक्शन करना चाहते हो अपनी वेबसाइट के लिए, उस पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसका आपका गोल क्या है? ब्रांड अवेयरनेस गोल है कि आपको आपकी ऑडियंस के लिए ट्रस्ट बिल्डिंग आपका गोल है, या आपको कोई नर्चरिंग करना है आपकी ऑडियंस का कि भाई उसको, आपका इंडस्ट्री ही नया है और आपकी इंडस्ट्री में इतना अवेयरनेस वाला कंटेंट ही नहीं है, तो यू विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको ही अवेयरनेस वाला कंटेंट पब्लिश करना पड़ेगा क्योंकि आपकी इंडस्ट्री बहुत नहीं है। काफी बी टू बी में होता है ऐसा। सो अभी क्या होता है इसमें कि जैसे साहिन ने भी बोला कि टॉपिकल अथॉरिटी के लिए चाहे वो आपको ट्रैफिक ड्राइव करे या ना करे, बट आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए 10 20 30 एटलीस्ट टॉप ऑफ द फनल कंटेंट आपको पब्लिश करना पड़ेगा। हाउ टूज हो गए, लिस्टिकल्स हो गए, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका ब्रांड जो है वो सारे टॉपिक, सारे क्वेरीज वो पर्टिकुलर कस्टमर जर्नी में कवर कर रहा है। ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेस्ड ऑन योर गोल, जरूरी नहीं है कि ब्रांड अवेयरनेस आपका गोल है तो उसमें आपके वो जो ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए, उसका केपीआई आपका अलग होगा। ओके। आप टॉपिकल अथॉरिटी के लिए कर रहे हो तो उसका केपीआई अलग होगा। तो आप अभी क्लिक्स पे मत डिपेंडेंट रहो, इंप्रेशंस पे देखो। ओके। टोटल एट्रीब्यूटेड इन्फ्लुएंस पे फोकस करो। एंड या अगेन माय आंसर इज यस, बट विद क्लैरिटी। बिजनेसेस को टॉप ऑफ द फनल कंटेंट में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। Any thoughts? I think so. Pratik joined us on the stage. Vapas, I'll invite you again if you want to share your thoughts, Pratik. Yes, Deepak. जो आपने कहा कि ब्रांड अवेयरनेस अगर हमारा टारगेट है तो केपीआई अलग होगा और टॉपिकल अथॉरिटी या फिर इस तरह से कुछ अगर हमारा टारगेट है तो केपीआई अलग होगा, लाइक इम्प्रेशंस। तो इस पे हम लोग और क्लैरिटी ला सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली केपीआई हो सकता है अगर हमारा टारगेट ब्रांड अवेयरनेस है। हाँ जी, जरूर जरूर, क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल ब्रांड अवेयरनेस आपका है तो आप क्या करोगे कि आपके ब्रांड क्वेरीज का सर्च डिमांड बढ़ रहा है क्या, आप गूगल ट्रेंड्स में जाके देखोगे। ठीक है। आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ रहा है कि नहीं आपको। अभी फॉर एग्जांपल आपके ब्रांड के 150 साइटेशंस है, 150 साइटेशंस है, तो वो आपके ब्रांड मेंशंस या आपके साइटेशंस बढ़ रहे हैं, आपके ऑर्गेनिक
आपका ऑर्गेनिक लिंक एक्विजिशन है, मतलब क्योंकि आप अवेयरनेस के लिए काफी कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, आपने 150-200 ब्लॉग्स पब्लिश किए पिछले 6 महीने में बाय चांस फॉर एग्जांपल, तो 150-200 ब्लॉग्स में से 5-10 ब्लॉग्स अच्छे चल गए, उस पर अच्छा ट्रैफिक आया, वो थोड़े वायरल गए, तो कोई कुछ भी सर्च कर रहा होगा वो टॉपिक के अराउंड, तो आपका ब्लॉग रैंक कर रहा होगा, तो वो आपके ब्लॉग का लिंक लेके अपने ब्लॉग में, अपने न्यूज़लेटर में कहीं ना कहीं साइटेशंस देगा, तो वो ब्रांड अवेयरनेस का केपीआई, ब्रांड कीवर्ड का सर्च डिमांड बढ़ गया, ब्रांड कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बढ़ गया, वो होगा। ओके, एंड आपका ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी आप कर रहे हो, तो आपका एनपीएस स्कोर हो गया आपकी कंपनी का, ओवरऑल आपके प्रोडक्ट के रिव्यू रेटिंग्स हो गए, गॉट इट। आपके कस्टमर सपोर्ट टीम जो है आपका, ओके, उसके नंबर ऑफ क्वेरीज कम हो गए, क्योंकि आपने इनफ अवेयरनेस कंटेंट बनाया है कि आपके कस्टमर सपोर्ट टीम को डेली के अगर 200 टिकट्स आते थे तो कम होके 150 हो गए, 100 हो गए, तो इन अ वे आप अपने टीम का ही लोड कम कर रहे हो। ओके, कि लोग तो जो उनको डाउट है वो पहले गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, और उनको वहीं पे जवाब मिल गया तो वो कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट करने के लिए वो डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, और टिकट रेज करेंगे, कस्टमर सपोर्ट का वेट करेंगे, आंसर मिलेगा, वो लाइफ साइकिल बढ़ जाएगा तुरंत। अ, अगर आपको गेटिंग answer to your queries on your fingertips, every customer would prefer that. Okay, okay, fair enough. Interesting thoughts and questions here, insights on question number 3. Let's move to the next one. How can we make informational content actually drive results? So bottom line ये है क्वेश्चन का कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट से हमको बिजनेस को कैसे फायदा होगा, रेवेन्यू कैसे होगा। यस प्रतीक। Hi, sorry, after lunch I'm attending SEO Talk. I hope my voice is audible now. Yeah, you're audible. But I hope you are Yeah, safe. There's some police siren or ambulance siren. yeah, I actually can. I was in inside is I was at a co-working space. Yeah, but back to the answer. Uh, well, I am just creating a community based in Lisbon, and the community is targeting AI. And my goal is to I have to rank that community before the web summit. And is that website is have to be ranked and every prospect of AI. So that's what I'm serving in a plate that you will have all information about AI. It should be community, it should be any tools, it should be what happenings around in terms of AI. So right now I'm creating the content that very information based. For example, let's say top 10 AI tools 2025, and that's what I create a content based on the different formats, and that's what I try to add value uh, in each content, not just put the information that already existing, but according to the people have experience, what is the main authority of this tool, does it be useful, some quick, some tactics, and even this kind of content still works. And yeah, this last 2 weeks, there are very less traffic on the website. All of us, we had a hit from this AI. So still, yeah, I prefer we have to give information content. Yeah, it works. Yeah, just a fresh doing experimenting with the AI tool. So yeah, that's what part mentioned the tofu. Uh, Top of the funnel, the content. Yeah, um, still we need this kind of content to build brand awareness. Or it should be awareness in terms of what
people wants to helpful to read and scroll, etc. That's what my Fantastic, takes. fantastic. Okay, thanks, Pratik, for sharing uh, how you make your informational content drive results. Any more thoughts from Deepak, Sahin, Shreyas? One thing that I actually follow right now, I still click on links that appear on top 10 results rather than seeking information through AI overview. The reason being uh, that maybe I will change that habit once we have AI mode where we can ask related questions there. Uh, Answering to your question, how to actually create content that can drive value or sales, whatever we can say this. Uh, I think again we have to think what is our target. Is it awareness or that we have already discussed trust building or providing information or whatever it is, we have to track the KPIs that we have already discussed in previous question. Okay, okay. Thanks, Deepak. Thanks for adding your thoughts. Yes, Pratik. Yeah, what my takes is like whatever we trying to get search on AI reviews, I feel like this content should be more generalistic content in terms of it's like it's a basic content this user want, but if you want to get in detail or in depth something kind of things you want to go more deeper, I think I feel like I have to click the results below that's rank or some in the reference, and it should be have a more detailed overview about the content. So what I feel, it's like it's a mix up summary of all the reference links. That's what we get result in AI overviews. But for example, if you want something for detailed analysis of that's what you actually want, you have to go with the reference link, or you have to go with the open the uh, scroll down and to check the what the content ranks perform. And yeah, it's like a bit old for SEO, but for me it's like it still works about the, and it's like a very information content there, very more unique, authority, valuable content there. I guess that's why even I don't rely on AI overview. I feel like it's a summary, so we have to check it out. What we have a best for in terms of result. I mean, the user what looking for. Totally agree. So, my thought is ki if you want to drive results or conversions from informational content, so my theory is very simple कि अ, अगर आपका इंफॉर्मेशनल कंटेंट है वो केस में भी यू शुड नॉट कि भाई टॉप ऑफ द फनल कंटेंट है इंफॉर्मेशनल है इससे कन्वर्जन्स आते ही नहीं है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसमें कुछ ऐसा कन्वर्जन पॉइंट्स डालो ओके बी फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर का जर्नी क्या है आपका कस्टमर का जर्नी के बेसिस पे आपको टॉपिक्स कवर करने चाहिए तो उसमें चांसेस ज्यादा होंगे कि आपका कंटेंट कन्वर्ट हो आपको आपके कंटेंट के बीच में जैसे आपने इंट्रोडक्शन डाल दिया फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ आप जो सेक्शंस डाल रहे हो उसके बीच में रेलेवेंट सीटीएस डालने हैं आपको और वो सीटीए ऐसे नहीं होने चाहिए कि मतलब आपने सिर्फ एक टेक्स्ट पे लिंक डाल दिया एक प्रॉपर यूआई यूएक्स डिजाइन बना के पूरा बॉक्स बना के कलरफुल ऐसा एक सीटीए डाल दो आप ठीक है जो इंक्लूसिव लगना चाहिए ऐसा इंट्रूसिव एड्स नहीं लगना चाहिए मतलब जो स्क्रॉल किया पॉपअप आता है बहुत एनोइंग अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट खोलते हो
इधर राइट में पॉपअप आया, उधर पॉपअप आया, ये वो, दैट्स नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मेक श्योर कि आप ऐसा यूनिक रियल एक्सपर्टीज वाला नॉलेज दे रहे हो, उसमें ऐसी एनालॉजीज डाल रहे हो, ऐसे एग्जांपल्स डाल रहे हो जो रियल लाइफ हो, जिससे आपकी जो ऑडियंस है वो कनेक्ट कर पाए। जितना वो कनेक्ट कर पाएंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि वो आपके कन्वर्जन पॉइंट्स को क्लिक करेंगे, सीटीएस को। रिसेंटली मैं एक I'll share a very short story, very interesting anecdote. मैं एक सेल्स कॉल पे गया। सो आई एम कंसल्टिंग फॉर एन एसईओ क्लाइंट। सो द क्लाइंट वाज based out of US, and sales person कॉल पे था, and I was there to answer a couple of SEO questions. So I noticed that sales person was very smart. जैसे वो क्लाइंट ने अपना कॉफी मग उठाया तो आर्सेनल क्लब का मर्केंडाइज वाला कॉफी का मग था, कॉफी का कप था। तो तुरंत उसने कन्वर्सेशन शुरू किया कि डे बिफोर यस्टरडे देयर वाज दिस मैच अगेंस्ट आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम, एंड माय फेवरेट टीम इज टॉटनहम, डोंट माइंड इट, दे आर आर्सेनल राइवल्स, ऐसे करके उसने इतना अच्छे से कनेक्ट किया ना। फिर उसने सारा प्रेजेंटेशन दिया क्लाइंट को, एंड क्लाइंट ने कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा, एंड ही वाज वेरी स्मार्ट द सेल्स गाय। उसने कॉल एंड होते होते भी बोला कि नेक्स्ट मैच संडे को है, ये है वो है। एंड फिर उसने जब मंडे को फॉलो अप ईमेल डाला, उसमें भी वो मैच के बारे में एनेक्डोट डाला था। तो उसको इतना कनेक्ट किया ना, तो क्लाइंट कन्वर्ट हो गया मतलब। तो ये पूरा आप अपने ऑडियंस को, आपको हर आपको बेचना आना चाहिए, आपको सेल्स करना आना चाहिए। सो दैट्स अबाउट इट। आई वांटेड टू शेयर अ स्मॉल एनेक्डोट जो मैंने अभी रिसेंटली देखा। यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम सेल्स पीपल। एंड आप लाइफ के कोई भी स्टेज में हो, किधर भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सेल्स इज सच अ स्किल कि आपको that can take you to next level. ओके, सो इंटरेक्टिव सीटीएस डालने हैं, एंड रियल एक्सपर्टीज आपको इंक्लूड करना है जो ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। एंड आपको बीच बीच में इंटरनल लिंक्स, कॉन्टेक्चुअली इंटरनल लिंक्स डालने हैं, ताकि अगर उनको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और ये कंटेंट से कोई रिलेटेड कंटेंट है उनको पढ़ना है, और बीच में रिलेटेड ब्लॉग्स का भी आप डाल सकते हो यूआई कि ये रिलेटेड ब्लॉग्स है, इफ यू वांट टू रीड एट द एंड ऑफ द ब्लॉग, ऐसे आप काफी वेबसाइट्स पे दिखता है। तो दैट्स आल्सो अ वेरी गुड टॉप ट्रैफिक ब्लॉग्स, रिलेटेड ब्लॉग्स, ऐसे सेक्शंस डाल सकते हो एट द एंड ऑफ द ब्लॉग। ओके, so yeah, these are the tweaks you can do to informational content so that you can actually drive at least some results out of it. Okay, moving forward to the next question. What is the risk of only doing informational content? जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो होता है टॉप ऑफ द फनल होता है, यानी कि आप वाइड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। तो अगर सिर्फ उन्हीं को टारगेट करने के लिए कंटेंट अगर हम बना रहे हैं, तो मिड ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल वाले ऐसे ही रह जाएंगे, उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं, उनको जो चाहिए उनको मिलेगा नहीं। तो कन्वर्जन जाहिर सी बात है हैम्पर होगा यहाँ पे। 100%। अगर सिर्फ टॉप ऑफ द फनल कंटेंट पब्लिश किया, मतलब आपने इंफॉर्मेशनल, मतलब सारे हाउ टू व्हाट इज वेयर व्हाट, सारे कंटेंट पब्लिश किया, तो वो तो आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट बन जाएगा, जो एक नॉर्मल ब्लॉगर्स वेबसाइट है। ठीक है, उसमें ना तो मिडल ऑफ द फनल, अगर उसको डिसीजन लेना है कि दिस वर्सेस दैट टूल, कि सैमरश वर्सेस एचरेफ्स, अगर आपने वो डिसीजन मेकिंग जर्नी वाला मिडल ऑफ द फनल कंटेंट नहीं डाला है, तो वो फनल ब्रोकन है मतलब। ओके, एंड अगर आपका मिडल एंड बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट का एडुकेशन होगा, बट आप
केस स्टडीज कैसे डालोगे? आपके पास कंपैरिजन पेजेस नहीं होंगे, ठीक है? और इससे क्या होगा कि बाउंस रेट बहुत बढ़ जाएगा वेबसाइट का ओवरऑल। कि इंफॉर्मेशन लेके पढ़ के द एंड ऑफ द डे यू आर एडुकेटिंग, बट फायदा कोई और ब्रांड लेके जाएगा, आपका कंपटीटर। हाँ प्रतीक। Yeah, might be because of we cannot. That will be impact on a thin content, and that doesn't drive traffic that much. So that's my take that maybe information content should before was maybe it was a thin content, so it should be more like hub and spoke model and creating content around the topics that you targeted. So my key point is like a thin content, and that's why too much information content doesn't get. Yeah, totally makes sense. Okay, continuing the momentum, we'll move on to the next question. We are halfway through it, 30 minutes past, and अगर आपको ये टॉपिक के अराउंड और कोई भी क्वेश्चंस है जो मैं पूछ रहा हूँ उसके अलावा, तो भी आप पूछ सकते हो। ओके, एंड दोज हु आर लिसनिंग to the recording probably after the session, you can always ask questions by joining our SEO Talk WhatsApp community. You can ask questions on X by by posting a tweet using the hashtag SEO Talk, or you can ask questions on LinkedIn, anywhere. Okay, fair enough. Moving forward to the next question. Is there a smarter content strategy than just blog more? क्वेश्चन ये है कि मस मतलब ब्लॉग पे ब्लॉग कंटेंट पब्लिश करने से आगे कोई स्ट्रेटजी है क्या इंफॉर्मेशनल कंटेंट में, कि सिर्फ ब्लॉग्स ही पब्लिश कर सकते हैं? हाँ दीपक। आई थिंक जैसा कि अ, कुछ टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि एसईओ का जो एक बोला जा रहा है सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन और डिस्कवर, तो हमें कंटेंट में डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत होगी कि जो लोग सर्च करें सिर्फ उन्हीं के पास हम ना जाए, बल्कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं, और जहां जहां वो हैं, जैसा कि आपने पिछली बार वो प्लेटफॉर्म बताया था स्पार्क टोरो, उसके मदद से, उस तरह के टूल्स का मदद से कि हमारा ऑडियंस कहाँ पे है और उनके लिए उसी तरह का कंटेंट बनाना जो उस प्लेटफॉर्म पे चलता है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन इंस्टेड ऑफ कि हम सिर्फ ब्लॉग ही करते जाएं, पहले 4 फिर 10 फिर 12 इस तरह से। लवली लवली, बहुत सही। एनीवन एल्स? श्रेयस, प्रतीक, साहिन, आपको कुछ ऐड करना है? तो मुझे एक क्वेश्चन था, हाँ जी श्रेयस, बताइए। लाइक जो हम अभी जो फ्यूचर में जो हाउ टू कंटेंट करने वाले हैं, जो लाइक इंफॉर्मेशनल कंटेंट में मोस्टली लाइक व्हाट हाउ और हु के रिलेटेड मोस्टली कंटेंट रहता है। तो अभी लाइक एआई एलएलएम बढ़ते जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोग अभी सर्च करेंगे फ्यूचर में। तो जैसे कि दीपक और साहिन बता रहे थे, प्रतीक भी बता रहे थे कि टॉपिकल अथॉरिटी के लिए हम कंटेंट लिख रहे हैं, वो बात सही है, मतलब मैं उससे एग्री करता हूँ। बट जो फ्यूचर में हम कंटेंट जो लिखेंगे इंफॉर्मेशनल क्वेरीज के रिलेटेड, उसके ऊपर एआई से तो ट्रैफिक मतलब नहीं आएगा, वो सिर्फ लाइक मेंशन होगा कि अपना ब्रांड है, उतना के लिए लाइक मेरे को लग रहा है कि वो सिर्फ यूजफुल रहेगा। उस पे लोग क्लिक करेंगे कि नहीं, वो तो मुझे डाउट है, बट ब्रांड विजिबिलिटी वहाँ पे हो सकती है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो हाउ टू रिलेटेड जो कीवर्ड्स है, उस पे लाइक यूट्यूब पे ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है शायद से, अगर उसको लाइक वो कॉन्टेक्ट वो जो कंटेंट है उस तरीके से हम अगर वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो।
मतलब उस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा बहुत बहुत सही पॉइंट बोला आपने श्रेयस। टोटली अग्री। एंड यूट्यूब पे आई थिंक सो टॉप ऑफ द फनल कंटेंट शॉर्ट फॉर्म वीडियोस आप यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब शॉर्ट्स पे या इंस्टाग्राम रील्स पे। अगर आपके कंट्री में टिकटॉक वर्क कर रहा है तो टिकटॉक करो, इंडिया में तो नहीं चलता, इंडिया में बैंड है। सो या फॉर श्योर डाइवर्सिफाई करना चाहिए कंटेंट का प्लेटफॉर्म, कंटेंट का फॉर्मेट। यूट्यूब एंड गूगल इज वन एंड द सेम। आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट डालो और वो डिस्क्रिप्शन में आपके ब्लॉग, टेक्स्ट ब्लॉग का यूआरएल भी डाल दो। बट अगर आपको, आप टॉप ऑफ द फनल कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आई शेयर अ कपल ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने बैकलिंको का वेबसाइट देखा होगा, आपने एhrefs का वेबसाइट देखा होगा, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि domain.com/blog/ सारे टॉपिक्स पब्लिश कर रहे हैं, व्हाट, हाउ, टॉप ऑफ द फनल। कुछ कंपैरिजन वाला ब्लॉग भी डालना है तो उसमें डालेंगे। आइडियली अगर आपने देखा होगा बैकलिंको और एhrefs पे, तो वहाँ पे हब्स होते हैं। इफ यू हैव चेक, तो इंफॉर्मेशनल कंटेंट को आप सेग्रीगेट कर सकते हो थीम वाइज, कि ये पूरा हब है, फिर ग्लोसरी का सेक्शन है शायद एक एhrefs पे, तो वो भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट ही है। बट अगर आप हब्स में डिवाइड करते हो, सो इट्स अ मशीन लर्निंग दिस थिंग। एक मशीन्स है जो अल्गोरिदम्स हैं, गूगल बॉट्स हैं, तो उनको ऐसा समझ में आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर यूजर्स जो ग्लोसरी के लिए देख रहे हैं, तो ग्लोसरी का हब ये है, ये है, तो वो क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, या कुछ जैसे फाइनेंस निश में कोई होता है तो जीएसटी कैलकुलेटर बना दिया, वैट कैलकुलेटर बना दिया, तो वो भी काइंड ऑफ प्रोडक्ट लेड एसईओ अप्रोच हो गया, बट वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट ही है, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके। एंड काफी सास वेबसाइट्स पे आप B2C ले लो, B2B ले लो, एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का एक सेक्शन होता है। कभी कभी सब डोमेन पे होता है, कभी कभी सब फोल्डर में होता है, और कभी वो नोशन पे होस्ट करके पूरा सब डोमेन पे लिंक कर देते हैं। तो आइडियली आई वुड रेकमेंड कि वो सब फोल्डर में होना चाहिए। और जो आपके FAQs है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, वो जनरली रैंक करते ही है, क्योंकि जो यूजर्स हैं उसको फीचर्स के अराउंड कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछते हैं वो। ओके। एंड तो वहां पे कोई ऑप्टिमाइजेशन का कोशिश नहीं करता, मतलब आपके FAQs है, यूजर्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पे रेलेवेंट CTAs डालो कि ये क्वेश्चन ये सर्विस के लिए, ये क्वेश्चन ये प्रोडक्ट के लिए, गो अहेड एंड ऐड इंटरनल लिंक्स, ऐड CTAs वगैरह। ठीक है। वहां पे भी अगर आपका 0.1% कन्वर्जन आया, फिर भी व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब आपका आ, इस पे क्या बोलते हैं, 1000 के ट्रैफिक पे 10 कन्वर्ट हो गए, तो नथिंग लाइक इट, मतलब। तो कोई भी ये छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज गूगल और SERP में इतने चेंजेस आ रहे हैं। आपके पास जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है उस पे आप पहले कैपिटलाइज करना सोचो। वी आर रनिंग बिहाइंड टू गेट मोर एंड मोर ट्रैफिक, बट आप देखो ना, आप आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी 50,000 का मंथली ट्रैफिक आ रहा है। 50,000 पे आपका कन्वर्जन परसेंटेज क्या है? और आपका इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड्स देखो, दूसरे सास टूल्स के साथ बात करो, उनको पता चलेगा आपको कि बेंचमार्क क्या होता है कन्वर्जन्स का जो अच्छे है। तो बेंचमार्क अगर 7-8% है और आपका सिर्फ 2% पे कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब वहां पे आपके एग्जिस्टिंग कंटेंट में भी अपॉर्चुनिटी है। A/B टेस्ट करते रहो, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, और इवेंचुअली 2 से 3, 3 से 5% आपका कन्वर्जन बढ़ाओ एग्जिस्टिंग कंटेंट पे, और पैरेलली आप नया कंटेंट तो प्रोड्यूस कर ही रहे हो। ओके। एंड दूसरा एक वे अराउंड है, ब्लॉगिंग से थोड़ा और आगे जाके इंफॉर्मेशनल कंटेंट करना है, तो जो सेल्स टीम है, जो कस्टमर सपोर्ट टीम है, उनको क्या फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस को लो, उसमें कॉमन जो क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, उसके टॉपिक्स बना दो, उसके ब्लॉग्स पब्लिश करो, उसके FAQs में और क्वेश्चंस पब्लिश करो। सो उससे क्या होगा कि सेल्स टीम कैन ऑलवेज रेफर कि भाई ये पढ़ लो,
उनको हर बार जाके एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, तो आपको उससे ये ट्रैफिक नहीं आएगा डायरेक्टली, गूगल सर्च ट्रैफिक इनिशियली नहीं आएगा, बट डायरेक्ट ट्रैफिक आएगा, रेफरल ट्रैफिक आएगा, क्योंकि आपके सेल्स टीम ने, कस्टमर सपोर्ट टीम ने वो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट शेयर किया. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. How do we measure success beyond traffic for informational content? Very simple, straightforward question. Anyone wants to take this up? Informational content का success measure करने के लिए आज की तारीख में we can't just publish और फिर वेट करेंगे कि कितने keywords रैंक हुए, कितने सेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, उसके लिए वेट नहीं करना है. उससे पहले आपको एंगेजमेंट मैट्रिक्स देखने हैं. फॉर एग्जांपल, आपने 100 ब्लॉग्स पब्लिश किए पिछले 6 महीने में, 100 में से कितने ब्लॉग्स हैं जिसमें आपके रीडर्स 50% से ज्यादा ब्लॉग्स को, एक पर्टिकुलर ब्लॉग को 50% से ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं, वो आपको चेक करना है. तो आप जब कस्टम इवेंट सेटअप कर सकते हो गूगल टैग मैनेजर में, तो आप जब वो करोगे जीटीएम पे सेटअप करके, फिर आपको पता चल जाएगा कि 100 में से सिर्फ आपके 20 ब्लॉग्स ही यूजर्स 50% से आगे रीड कर रहे हैं, उस बाकी 80 ब्लॉग्स तो 25-30%, 40% रीड करके बाउंस हो रहे हैं. तो आपके पास वो डेटा मिल गया कि अच्छा, ये कंटेंट में यूजर्स फोर्थ पैराग्राफ के आगे नहीं जा रहे हैं. आपने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी से भी देख सकते हो. आप कुछ कोई और हीट मैप के या सेशन रिप्लेस के टूल्स इंस्टॉल कर सकते हो. ओके, सो जो पुराने जो मैट्रिक्स थे, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, ठीक है, वो सब थे, बट उससे वो है ना, बहुत वेग मैट्रिक्स है. अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप कर सकते हो. एंड जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है, उससे क्या होता है कि जो पूरा फनल है ना, उसका फर्स्ट टच एट्रीब्यूशन होता है. तो आपका जो फर्स्ट क्लिक टू लास्ट क्लिक जर्नी जो है, वो भी आप मल्टी चैनल फ्लो का जो रिपोर्ट होता है गूगल एनालिटिक्स पे, उससे आप मेजर कर सकते हो, उससे आप देख सकते हो. ओके, कि यूजर वेबसाइट पे आया, एक सेशन हुआ, ये ब्लॉग पढ़ा, वहां से दूसरे ब्लॉग पे गया, वहां से ये लैंडिंग पेज पे गया, वहां से ये कन्वर्जन पेज पे गया, वहां से थैंक यू पेज पे गया. पूरा जर्नी आप फर्स्ट क्लिक टू लास्ट क्लिक देख सकते हो. उससे आपको पता चलेगा कि कितने असिस्टेड कन्वर्जन आए, क्योंकि इंफॉर्मेशनल कंटेंट को काफी बार डायरेक्ट कन्वर्जन अट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि कन्वर्जन आर लास्ट क्लिक अट्रीब्यूशन. तो आपको फर्स्ट क्लिक असिस्टेड कन्वर्जन कितने हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे ब्लॉग्स फाउंडेशंस है, यहाँ से कस्टमर्स गूगल में रैंक करते हैं, यहाँ से कस्टमर्स की जर्नी चालू होती है. यस प्रतीक. Yeah, my insight is like also the content which are not performing. That we can add value and we just keep updating this content, create more valuable insights or something. We can add some reference or link or maybe embedded video of the someone that we can make the content which are not performing. We can make it better. So maybe there are some impressions, some additional links. So as usual, content which are not performing, maybe uh, you can you can change the person and you can change the bit content or maybe you can update, for example, SEO audit in 2025 or AI audit in 2025. If this kind of content, it should be updated, I guess, every 2 to 3 weeks. You just put the thing what doesn't work and can create more valuable. That's how you have a chance that the content will be performed. Totally agree. 100%. Okay, Isha has also joined us. Isha, welcome to SEO Talk episode 99. And we are in the second half. But yeah, we'll continue with our conversation. And so, one of the other thing is brand search demand. अगर आपका बढ़ गया है, okay, if you have published a good sizable amount of blogs in last 200 like last 12 months,
if you publish 200, 300 blogs, what was your brand search a year ago and what is it now? तो आपको उससे भी पता चलेगा कि आपका informational content का campaign successful हो रहा है या नहीं हो रहा है. So I'll repeat all the points, couple of points which I mentioned. एक assisted conversions है. Okay, आपका content कितना scroll हो रहा है, कितना रीड हो रहा है और कितने CTS क्लिक हो रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी वगैरह हीट मैप सेशन रिप्ले टूल से चेक कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूज़लेटर साइनअप्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंडिकेटर कि जिसको आपका कंटेंट अच्छा लगा तो वो आपकी वेबसाइट पे न्यूज़लेटर साइन अप करेगा. ओके, एंड ब्रांड सर्च इज ऑल्सो वन थिंग विच आई जस्ट मेंशन. Okay, cool. Any more thoughts on this question or shall we move to the next one? Cool. Let's move to the next one. Are we too much obsessed with rankings and page views as SEO professionals? I think so. The answer is very straightforward, but if anyone wants to share a witty reply, humorous reply to this question. हाँ दीपक, आप कुछ बोल रहे थे. व्यूज से ही तो हमें वो डोपामिन मिलता है ना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, can't agree more. Totally agreed. I think so. इसमें है ना पूरा इकोसिस्टम का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ एसईओस का नहीं है. आई थिंक सो जो जहाँ पे भी आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं, आपके जो मैनेजर्स होते हैं, दे हैव बीन पुशिंग. ठीक है, तो जो भी आपके क्लाइंट के साथ जो आपका एंगेजमेंट है, वो डे वन पे जो आपका एक्सपेक्टेशन सेट हुआ है वो क्लियर ही नहीं है. मतलब आप एक एसईओ कैंपेन स्टार्ट कर रहे हो क्लाइंट के साथ, तो डे वन पे क्लियर होना चाहिए कि 6 महीने बाद ये रिजल्ट चाहिए, 12 महीने बाद ये, और 18 मंथ्स के बाद ये, 24 मंथ्स के बाद ये. एंड डे वन पे आप क्लियर कर देते हो कि भाई पहले 3 to 6 months वुड बी अ लॉट ऑफ इनपुट्स गिवन. वहाँ पे आउटपुट की एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि काफ़ी इनपुट्स होंगे. आप ऑन पेज हाइजीन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करोगे, आप टेक्निकल एसईओ में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो पहला 1-2 महीने में आप वो सारी चीज़ें फिक्स कर दोगे. एट द सेम टाइम आप पूरा कंटेंट कैलेंडर प्लान बना के फिर कंटेंट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा. मंथ 2 ऑनवर्ड्स आप कंटेंट पब्लिश करना शुरू कर दोगे. एक बार आपका कंटेंट पब्लिश होगा, फिर 2-3 महीने बाद थोड़ा थोड़ा इंप्रेशंस आएगा, फिर इनिशियल सेट ऑफ क्लिक्स विल स्टार्ट कमिंग. सो या, दैट इज हाउ थिंग्स आर. बट हम लोगों ने सेशंस और रैंकिंग्स को इतना चेज किया है, इतना चेज किया है कि रेवेन्यू के साइड हमने कभी देखा ही नहीं. एंड ऑब्वियसली वी आर ऑलवेज आउट ऑफ टाइम. एसईओ इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन. सो उसमें ऑब्वियसली you have to keep going at a good pace. आप ऐसा sprint करके खत्म हो गया ऐसा तो नहीं है. तो इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ कि कितना ट्रैफिक आया, कितना ट्रैफिक आया. 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए. सो I would recommend कि we should replace chasing these vanity metrics with value metrics. Okay. We have Isha on the stage. Isha, if you want to add anything, आपको कुछ ऐड करना हो तो. Hey, hi everyone. So, part two things. One is, I mean, of course, rightly said. I was about to say that we are not the one who are chasing ranking and impression. It is the demand of whoever it is, whether it is your manager or rather your client, because sometimes you need to, you have to put a few things into the plate to tell, okay, why they're paying it for you. So, so those are our metrics to ensure that we are getting our billings on time. So so it's so there are two side of it. One is you show it and second is you are working towards it. So these are like, you can show them, okay, and make them happy and temporarily calm them out. But again, like, I mean, I would again go back to the revenue side, because
revenue, whenever we are right now chasing, or rather I would even go up and say that at this point of time, maybe we need to revisit all of our metrics. Because first of all, previously when we used to create projections, we used to create projections based on ranking, keyword ranking, ranking based on volume based on the kind of people we were expecting to come and reach out. Now if the whole keyword ranking ecosystem goes away, what will be our like what exactly will be our base, or what will be our science behind coming up with the projections? It cannot be just saying that, okay, because you got last 6 months, we are assuming that you will get an X number, because that X there has to be some science behind it. Secondly, since this is something which I talked in my previous couple of spaces also, that we might need some other tool, or rather another space of analytics to think of what matrix we want to define. Because Google right now, still, if you're going to just rely on Google Analytics or Google Search Console, they are going to dominate their platform. But to tell your client that you are getting leads from some other channels also is very difficult. Like today only I was talking to one of the prospect, and they surprisingly told me that, Isha, our one of our lead actually came up where in my first call the client itself said that we found you on ChatGPT, and we got to know from them that we were on ChatGPT. Otherwise we were not even checking. And of course, like, you have to, nobody take the effort to go up and uh, see in depth in analytics to that extent. So I feel like, we really need a good sophisticated tool. No more Ahref, no more SEMrush. Maybe one tool which can give us a realistic data where you can think of, okay, where exactly your website is going. Another important thing which we need to understand is, with this whole AI world happening, now SEO is no more only restricted to the website. Now you are creating a brand. You are creating a brand with, of course, you talk about attribution, but part attribution also in GA4, Google has way too complicated it. So you don't even know whether you're getting right attribution to the right place. So it's like projecting numbers, claiming is easy, but achieving them is difficult because we don't have the real picture. A lot of times, because I myself was debating with one of my clients that, do you have, like, right now you're cross channel, you have a website, you have an app, do you have a tracking mechanism where you can tell me that how many people actually searched, came to the website, but converted on the app? So they don't have, like, we don't have a ecosystem where uh, you have the journey well defined. You're right that we have tools, but those tools are also like, there are very few tools which really give you the data science kind of an approach, where right now intelligence needs to be added, where those data science people has to be properly onboarded with people, with, especially for the companies which are entrepreneur level, where how their data has to be valued. So I feel first of all, your numbers should not be, matrix should not be common across all. So one thing which I always educate every business owner is, your matrix your matrix basically depends on which funnel you are. So for example, at this point of time, I'm not talking about the marketing funnel, but I'm talking about the startup funnel. That, okay, are you at the beginner stage of your organization where you've just started? If you are at the starting stage where you are right now just building up your website, at that point of time you should focus on awareness, and that point of time your focus should be impressions, where as many people are coming. You should focus on that. When you move your own business from that level to the medium level, then at about that point of time you should focus on your users, sessions, engagement time, and other metrics. And when you are so mature in the business line, where then you should think of the conversion. So it also depends on your business cycle. And matrix cannot be common for everybody, every industry, every website, because consumer, you need to understand your customers first.
you need to understand whether your customer is something which you can be easily converted also. Like I was debating with one of my clients saying that if so they literally said, they said we our objective is every clicks should be converted. I said it's way too wishful. How can like every click getting converted is something which even wishing that is too wishful, which means that even if in future you're doing any awareness campaign, you're expecting that everybody should convert, which is way too crazy. So people doesn't understand, the clients will never understand, your managers will never understand, the person, see, the person sitting at the top will never understand. You need to just understand to whom you're talking, and basis on which you are basically working on the matrix. So for example, if you're directly talking to the owner, for them the only thing which matters is conversions or leads. The more leads you are giving, they doesn't even care whether it is coming from SEO or other things, because now your leads might not even come from the website. So for example, if you have created a third party, you have run on a PR campaign for your SEO, those have given you leads. Now how are you going to measure that, and are you going to say that that is not attributed to SEO? There are places where you might have done a third party referral. Now that referral leads or referral conversions, a lot of times we don't even track and don't even attribute to organic. So I think things are getting complicated. Maybe to simplify it, we need more simple tools. We need more complicated tools who can easily make us understand these kind of things. But matrix is something which I would say that we have to move out of standard matrix and start thinking of other matrix right now, because we still rely on these tools. That's why ranking, impressions, all these are good things to sell. Oh, I love your take. I think so. Totally, I totally agree to it. आपने जो बताया, and think so. The demand is not matching the supply, and totally agree to it. Totally agree. And I think so. You can track a couple of brand using the brand radar feature. So if you are subscribed to Ahrefs or not, I think so. They are still running it on beta. So It's even not if you, accurate, but oh, okay. I'm actually using Ahref and Spyfu. They both have started using AI. So one is using brand radar. Spyfu also have their GPT kind of thing, which tells you if the brand is available. Mhm. Couple of my pitches went wrong because of that tool. They said we are there. You are saying we are not there because of that tool. Oh my goodness, this is crazy. Yeah, the tools are still in nascent stage, and I think so. We cannot 100% rely on that. Totally agree. Totally agree. Yep. Cool. Okay. We are inching towards end of our session. I'll quickly squeeze in the last question. So, what's the final verdict? Should we really stop creating informational content? Anyone who wants to share a real quick bit? I just put my point. I actually came late, so I'm not like I didn't No worries, no go worries. through Please go other ahead. things. I'll just give my take. I would say that again the same thing. Please understand your audience. I would say which industry you belong to. How important is informational content for your industry, for your customers conversion cycle, your customer attribution cycle basis, and also in your industry how much informational content is already present. Because if there is something which is already present, irrespective you say okay we are going to make something better, something better, something better, it's not going to be the case. So it's better, rather than focusing on making it something better, work on something going to which is unique and which could be the pain points of people. So it's purely custom, the answer is customized based on your customers and requirement. Okay, I'll just share my quick thought, and if anyone else also wants to share a thought, a final verdict on today's topic, you can unmute and share it. Um, I don't think so. We should stop creating informational content, but I totally think that creating pointless informational content
randomly choosing topics and publishing week over week, month over month, without any strategy, without any consideration of what topic are we choosing, what topic are we publishing. And as I mentioned in question number 3 or 4, we should create hubs, glossary hubs, other types of hubs on our blog section as well. Um, and if the content is not relevant to the core offering, if the content does not align to the brand, to the product, to the service that you're offering, or if it's not helping the users in any way, it's just a random shit piece of content on the internet. It's just digital noise. So smart SEOs will evolve the format and not abandon the function. So yeah, that's pretty much it on today's session. Thank you all for listening and joining in tonight.